Now the coal analysis. We analyze coal. Why we are analyzing coal? To know the exact composition of the coal or the basic composition of the coal. Now what is coal? It is a fossil fuel. Fossil fuel means which is prepared by when कोई भी चीज़ अगर बहुत सालों से millions of years से buried है, then it is going to form fossil. So it is a fossil fuel. इसमें कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है and because of the presence of carbon content, it has got high calorific value. Now different components which are present in coal is carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur. Carbon content is required in the fuel because जितना कार्बन कंटेंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैलोरिफिक वैल्यू होगी. हाइड्रोजन, when it undergoes combustion we get water. So because moisture present है और moisture अगर present है तो heating proper नहीं होती. So it is going to reduce the heating value of coal. So this is not required in the fuel. Nitrogen का combustion नहीं होता है. So it is non-combustible. Again it is not required in the fuel. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है लेकिन ऑक्सीजन फ्यूल में is not required because again it is associated with moisture. Now whenever sulfur is present, sulfur undergoes combustion forming SO2 or it is going to form SO3. और ये दोनों कैसी गैसेस हैं? एसिडिक गैसेस. और एसिडिक गैसेस हैं so again they are going to cause pollution. So इनके क्या क्या components हैं वो सब हमें determine करना है by coal analysis. The other things which we determine is moisture कितना present है coal में, then what is the volatile matter which is present or how much volatile matter is present, what is the amount of ash which is present. So to determine all these components we do coal analysis. So the coal analysis can be done by two ways. The first method to analyze coal is proximate method or proximate analysis. And the second is ultimate method or ultimate analysis. Now the basic difference between these two methods is proximate method एक empirical analysis है, whereas ultimate method exactly हमें composition बताता है. For example, if I have the structure or the formula of benzene is C6H6. According to proximate method, this is the empirical analysis. And ultimate method is going to tell how much carbon is present and how much hydrogen is present. So that is the basic difference between proximate and ultimate method. Proximate is an empirical analysis, ultimate is it is going to tell exact composition. Now we determine the first method is proximate method. It tells about the quality of coal. So quality means कितना moisture present है, कितना volatile matter present है, कितनी ash present है और कितना percentage of carbon है. और carbon जो है that is known as fixed carbon. और जब हम इसे डिटरमाइन करते हैं प्रॉक्सिमेट मेथड्स को, सो एक प्रॉपर सीरीज़ है जिसके थ्रू हम इसे डिटरमाइन करेंगे. सबसे पहले हम मॉइस्चर रिमूव करेंगे, उसके बाद वॉलेटाइल मैटर रिमूव करते हैं, फिर ऐश रिमूव करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट है. और वी कैन इन अदर वर्ड्स वी कैन से हम सबसे पहले मॉइस्चर की परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं, फिर वॉलेटाइल मैटर की परसेंटेज डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद ऐश की परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे एंड देन फ्रॉम दैम वी विल कैलकुलेट what is the percentage of carbon. So proximate method tells us about the quality of coal. The first thing which we are going to determine is moisture. Moisture determine करने के लिए suppose हमने 1 gram of coal लिया और इसको heat करेंगे for 1 hour at around 110 degree Celsius. This is the boiling point of water. So हम boiling point of water पे 1 gram of coal, 1 gram ही नहीं कोई भी ले सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कितना कोल है. इसको हीट कर रहे हैं 1 घंटे के लिए at a temperature of this and this is boiling point, around boiling point of water. So जब boiling point of water पे हीट कर रहे हैं तो इसमें जितना भी moisture है वो निकल जाएगा. After heating it, we are going to cool it and then we are going to weigh it. So because इसमें से moisture निकल गया तो इसका weight कम हो जाएगा. Then
From that we calculate the percentage of moisture, which is loss in weight divided by total coal into 100. So this will give the percentage of moisture which is present. And moisture is not required in the fuel. Why? Because it is going to decrease the heating value. अगर कोल में पानी है या किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं और उसमें वाटर प्रेजेंट है, so proper burning is not going to take place. The second component which we determine is volatile matter. वॉलेटाइल मैटर वो है जो कि जब भी हम बर्न करते हैं कोल को या फ्यूल को, तो जो स्मोक की तरह मूव करे या ऐसे ही बर्न हो जाए, बर्न्स इट इज अनबर्न्ड ही एस्केप कर जाता है, सो वो सारा वॉलेटाइल मैटर है. अगेन ये कोल की हीटिंग वैल्यू जो है या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को डिक्रीज करता है. सो अगेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द कोल. सो वॉलेटाइल मैटर इज ऑल द नॉन कंबस्टेबल मटेरियल जो कि बर्न नहीं हो पाता और स्मोक की तरह ऐसे ही निकल जाता है, अनबर्न. सो अनबर्न जितना भी मटेरियल कोल से निकल रहा है, दैट इज वॉलेटाइल मैटर एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्यूल. नाउ द कोल फ्रॉम विच मॉइस्चर हैज बीन रिमूव्ड, उसको हम एक क्रूसिबल में लेते हैं एंड देन दिस क्रूसिबल इज कवर्ड विद अ लिड. After covering it with the lid, it is heated for 7 minutes at a temperature of 950 degrees Celsius. The temperature can be plus minus 20 degrees. So, coal जिससे moisture has been removed is covered with a lid, taken in a crucible, covered with a lid, और उसको 7 minutes तक heat करेंगे at a temperature of 950 plus minus 20, and then it is cooled and it is weighed. Again जो भी volatile matter है वो burn तो हुआ नहीं, it is unburnt, it is removed unburnt as a smoke, so the weight is going to reduce. Then the percentage of volatile matter is given by loss in weight divided by total coal into 100. So this will give the percentage of volatile matter. The third component which we are going to remove is ash. जितना भी नॉन कंबस्टेबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कोल में होता है, दैट इज ऑल एश एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एश हिंदी में जो राख है वो ऐश है, और ऐश जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू है कोल का. सो ऐश इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉन कंबस्टेबल इनऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द कोल. नाउ द कोल फ्रॉम विच मॉइस्चर एंड वॉलेटाइल मैटर हैज बीन रिमूव्ड, दैट कोल इज heated for 30 minutes at around 700 degrees Celsius. Again it can be plus minus 20 degrees. So the coal from which volatile matter, moisture and volatile matter has been removed is heated for 30 minutes at a temperature of about 700. Then it is cooled and it is weighed. Suppose the weight comes out to be x1. फिर दोबारा से हम इसे 30 मिनट्स पे हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 30 मिनट्स के लिए हीट करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 700 डिग्री सेल्सियस. फिर कूल करेंगे, फिर वे करेंगे, और ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे. सपोज पहली बार x1 है, दूसरी बार x2 आएगा, तीसरी बार x3 आएगा, और फिर द वेट बिकम्स कांस्टेंट. सो फॉर डिटरमाइनिंग ऐश, the coal from which moisture and volatile matter has been removed is heated for 30 minutes at a temperature of about 700, and then it is cooled and it is weighed. And this process of heating is repeated again and again till we get a constant weight. And from the constant weight which is obtained, we calculate the percentage of ash, which is weight of ash
divided by total coal into 100. So this will give the percentage of ash. Now the last thing which we determine is carbon. So first is moisture, second was volatile matter, third is ash, and at the last we will determine the percentage of carbon. This is known as fixed carbon. So moisture heating value reduce करता है, volatile matter जितनी भी unburned चीज़ें हैं जो ऐसे ही unburned चली जाती हैं, that is volatile matter. Ash जितना भी inorganic non-combustible material है which is not required. These three things they are not required in the coal. Why? Because it is going to reduce the heating value. The percentage of moisture is given by loss of weight divided by total coal into 100. Volatile matter is also given by the same formula. The percentage of ash is given by weight of ash divided by total coal into 100. From these three we calculate the percentage of carbon. और कार्बन जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ज़्यादा कोल की क्वालिटी अच्छी है. So higher the percentage of carbon, greater is the calorific value, which is given by 100 minus percentage of moisture plus volatile matter plus ash. So by this formula we will give the carbon. So by proximate method, it is a qualitative, it tells about the quality of the coal. We are determining what is the percentage of moisture, what is the percentage of volatile matter, how much ash is there, and what is the percentage of carbon. So moisture, volatile matter और ash coal में required नहीं है. So by this method we are removing the three. So by proximate method we are not only determining the quality of coal but we are also improving the quality of coal. So this is all in proximate method. Thank you.